Hello students and welcome back to my channel. So today we are going to discuss chapter number 13 of your class 9 science, that is why do we fall ill. So we'll start with the exercises first. So question number 1 is, how many times did you fall ill in the last 1 year? What were the illnesses? Part A. Think of one change you would make in your habit in order to avoid any of or most of the above illnesses. Part B. Think of one change you would wish for in your surroundings in order to avoid any most of the above illnesses. So this is a homework question for you that you have to do it yourself. However, यहाँ पे आपको एक रेफरेंस दिया जाएगा जिसका हेल्प से आप उसका हेल्प लेके अपने आप से लिख सकते हो इन योर ओन वर्ड्स. जैसे आपको बोला क्या है, देखो लास्ट 1 ईयर पे आप कितने टाइम बीमार हुए हो एंड वो क्या बीमारी था, क्या इलनेस था, वो आपको बोलना है. फर्स्ट ये आपको डिस्क्राइब करना है. तो फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है थिंक ऑफ वन चेंज. आपको कोई वन चेंज के बारे में सोचना है that you could make in your habit in order to avoid any of the above illness. जो भी आपको illness हुआ था, बीमारी हुआ था, कौन सा ऐसा एक हैबिट आप चेंज करने से वो क्या होगा, वो चेंज हो सकता है, दैट यू हैव टू टेल. So here is a reference answer for you. I fell ill twice in the last year. I suffered from diarrhea first and then dengue fever. Part A. The changes made by me in the habits after suffering from the disease are as given below. First part. I will always drink purified and clean water and wash my hands before eating any food item. Second, I will live in a clean environment where disease spreading vectors will not multiply. An example of multiplying vector is mosquito. सो ये एक आपका रेफरेंस आंसर है. आपको जो भी इलनेस हुआ है इन द पास्ट ईयर आपको वो अच्छे से डिस्क्राइब करना है. नाउ कमिंग टू पार्ट बी, थिंक ऑफ वन चेंज यू वुड विश for inner surroundings in order to avoid any or most of the above illnesses. So what you can write, one change I would wish for in our surroundings in order to have a healthy society is to make pure drinking water available for the people. Consuming impure water is the root cause of many infectious diseases. So you can also like adopt this healthy lifestyle in order to live germ free, disease free. So what you can do, you can drink purified and clean water, you must take proper diet, then you must boil the water before drinking, and you should always develop the habit of eating fresh and healthy food. So next is a question number 2. A doctor, nurse, health worker is exposed to more sick person than others in the community. Find out how he or she avoid getting sick himself or herself. So देखो क्या होता है, डॉक्टर्स देन नर्सेज हेल्थ वर्कर्स वो क्या होते हैं, सिक पीपल के अराउंड पे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं. जैसे एग्जांपल अगर हमने हॉस्पिटल का लिया तो वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते फ्रॉम दिस इन्फेक्शियस डिजीज़, ये आपको फाइंड आउट करना है. So, some important precautions that need to be taken by the doctors, nurse, health worker while treating people who are sicker than others in the community are listed below. First point, do not forget to wear a mask when in contact with a diseased person. Very, very important. Second point, drinking purified water. Third, not neglecting cleanliness and personal hygiene. Fourth, keeping themselves covered appropriately when moving in an infected region. And the last point, eating nutritious food and maintaining a healthy diet. So it is always advised to wear a mask when you are near any diseased person, क्योंकि वरना वो क्या होगा, आपके अंदर भी वो डिजीज़ आ सकता है, वो स्प्रेड हो सकता है. फिर और भी आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे वॉशिंग हैंड्स विद सोप बिफोर ड्रिंकिंग वाटर और ईटिंग फूड. ठीक है, फिर ड्रिंकिंग सेफ वाटर इसी के अंदर आ जाएगा. एंड लास्टली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन. So these are the points that you can write down in your copy. Now moving on to question number 3. Conduct a survey in your neighborhood to find out what the 3 most common diseases are. Suggest 3 steps that could be taken by your local authorities to bring down the incidence of these diseases. Again, ये आपको खुद से सर्वे करना है, ये आपको खुद ही से आंसर करना. हाउएवर यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, उसका हेल्प से आप खुद से लिख सकते हो. ओके,
द फॉलोइंग 3 आर द मोस्ट कॉमन डिजीजेस इन माई नेबरहुड. ऐसे करके आप लिख सकते हो. कोल्ड एंड कफ, लूज मोशन एंड मलेरिया. So some of the preventive measures that can be taken are as follows. First, by drinking fresh, uncontaminated and clean water. Second, by maintaining hygiene, sanitary conditions. And lastly, by educating people about various preventive measures with the help of posters and pamphlets. सो सपोज़ आपने सर्वे किया एंड आपको ये फाइंड आउट करके आपको रिज़ल्ट क्या मिला. जो सबसे कॉमन डिजीज़ेस है वो क्या है आपका? सर्दी खांसी, कोल्ड एंड कफ, लूज मोशन एंड मलेरिया. सो क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आप अप्लाई कर सकते हो ताकि ये सब जो चीज़ें हो रहा है आपके नेबरहुड में वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या है, आपको हमेशा फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर खाना चाहिए जो क्लीन वाटर हो एंड हमेशा आपको बॉईल करके खाना चाहिए वाटर को. उससे क्या होता है, सब जर्म्स भी मर जाते हैं. एंड देन अगेन जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, बाय मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन, ओके, एंड बाय एडुकेटिंग पीपल.